हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? सो लैंडस्केप देख के आपको थोड़ी सी पता चल गया होगा कि वेयर वी आर गोइंग टुडे। So the city we're going to explore today is one of the very famous one, all over the world. A lot of tourists, काफ़ी लोग वहाँ पे घूमने के लिए भी जाते हैं. And there are a lot of community of subcontinent from Pakistan or India or Bangladesh are settled in this country. The place I'm talking about is London in the United Kingdom. तो आज हम जिस एरिया का विज़िट करेंगे, इट्स द प्लेस इज़ कॉल्ड हॉन्सलो. वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपकी कम्युनिटी है, देसी, पाकिस्तानी, इंडियंस, लॉट ऑफ लोकल शॉप्स जहाँ पे आपको वो लोकल डेलिकेसीज इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान एंड इंडियन फूड एंड एज वेल एज तुर्किश एंड अरबिक, और लॉट ऑफ शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट. काफ़ी रश होता है वहाँ पे वीकेंड पे स्पेशली, एंड लॉट ऑफ बार्गेन शॉपिंग. सो विल गो देयर टुडे एंड एक्सप्लोर दैट एरिया. As usual, the hotel which has this coffee machine is basically much appreciated. अगर आप लोगों ने कभी अगर बेस्ट कॉफ़ी ट्राई करनी है एंड यू कैन अफोर्ड इट, दिस इज़ द बेस्ट कॉफ़ी टू हैव इट फॉर योर होम. अगर आप नेस्प्रेसो मशीन अफोर्ड कर सकते हैं देन व्हाई नॉट. दिस इज़ द बेस्ट कॉफ़ी यू कैन ड्रिंक इन. इनके बेसिकली नेस्प्रेसो के अपने पॉड्स मिलते हैं, डिफरेंट फ्लेवर्स में हैं. आपको लाइट फ्लेवर में चाहिए, डार्क फ्लेवर में चाहिए, और आप वो जस्ट कैप्सूल जो है ना वो मशीन के अंदर डालें एंड इट विल टर्न आउट टू बी लाइक दिस. और आप इसका फ्रोथ चेक करें और उसका जो टेक्सचर होता है कॉफ़ी का, इट इज़ अ डिफरेंट लेवल. यू डोंट हैव टू रियली beat the coffee, you don't have to take all this effort, just put a capsule inside and that's it, your coffee is ready. Or it's very refreshing, very rich, very refreshing, and really wakes you up. That's the purpose of this. So कॉफ़ी पीने के बाद इट वॉज टाइम टू पुट दिस डू नॉट डिस्टर्ब साइन. बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे आपको अक्सर हाउस कीपिंग स्टाफ एंड देयर आर लॉट ऑफ क्लीनिंग स्टाफ, दे कम एंड कीप नॉकिंग एट योर डोर. अगर आपकी बिलोंगिंग्स कमरे में पड़ी हैं, कभी कभी वो आ भी जाते हैं कमरे में कि भाई जस्ट टू क्लीन अप द रूम. सो आपने अगर ये साइन वगैरह लगाया और डू नॉट डिस्टर्ब का, तो देन दे जस्ट अवॉइड. तो वो हमेशा जो है ना आप लगा लें एंड देन यू जस्ट मूव ऑन. सो होटल से बाहर निकल के बाद वहाँ से बस लेनी थी, जो लोकल बस थी वहाँ पे. सो इनकी बसें आप ऑब्वियसली देखेंगे कि इट्स रियली कूल, डबल डेकर बसेस होती हैं. मज़ा आता है आपको वैसे भी उसमें बैठने का एंड देन जस्ट गो अराउंड. सो शॉर्टली आफ्टर अ लिटिल वॉक आई अराइव्ड एट द बस स्टेशन एंड स्टार्टेड वेटिंग फॉर द बस. And there comes the school bus. So this was my route for the bus where I have wanted to go to the Honslow. तो ऑब्वियसली मुझे जो है ना वो सेकंड डेक पे जाना था. इट वाज क्राउडेड, वीकेंड था, तो काफ़ी लोग जो थे वो ज़ाहिर है एंड दे वर टेकिंग दिस बस टू गो टू दैट एरिया. द एरिया इज़ वेरी फेमस. वहाँ पे आपको काफ़ी डिफरेंट किस्म के ब्रांड्स मिलते हैं. प्राइम मार्क है वहाँ पे, आपको लोकल देसी लाहौरी फूड या इंडियन फूड या तुर्किश फूड, कुछ भी आप वहाँ पे यू नो अगर यू आर इनटू दिस कम्युनिटी यू विल लव इट. So it's about like 20 to 25 minutes of drive by the bus. को फेयर इतने ज़्यादा नहीं है बसेस के. आप अपने डेबिट कार्ड अगर आपके पास है आप उससे पे कर सकते हैं. अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है आप क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं. या फिर अगर आपके पास लोकल वहाँ का एक कार्ड मिलता है, जैसे हमारे यहाँ पे हर जगह पे आपको एक टिकट या कार्ड लेना पड़ता है. अगर आप वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं तो सब ने लोकल वहाँ का कार्ड लिया हुआ है. इट्स कॉल्ड द ओइस्टर कार्ड. And you can use it for your daily commute. You can go up and down to the buses and even use it at the train station. So this was one of the area that we were passing by and it looked like all like a mini India or mini Pakistan, जहाँ पे काफ़ी आपको जो है सब्जियों की दुकानें और आम और लोकल मसाले और इंडियन रेस्टोरेंट्स और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स, you find it all around the area. वीडियो क्योंकि थोड़ी लंबी है, आई वेंट देयर फॉर basically a whole day. So I tried some Turkish food, I went for shopping as well. So I divided into two parts.
I'll upload it in two parts, and if you are willing to watch, you can watch on the second part as well. So I was sitting at the back, and shortly after, the passenger in the front seat, they just went away, and I just jumped into the front seat just to see the view and to really appreciate the weather and the landscape around. And shortly after that, it was my stop where I wanted to get down the Honslow. वहाँ से बस नीचे उतरे, and then I started walking towards the market, the Honslow Central Market I wanted to go on. Weather was really nice. Sunny, थोड़ा warm, not in terms of warm like if we come from Middle East तो हमारे लिए कोई इतना warm नहीं, हमारे लिए तो फिर भी ठंडा ही होता है. लेकिन वहाँ के लोगों के लिए everyone was wearing a short and they were like in a t-shirts. उनके लिए ज़ाहिर है it's quite a warm weather if it's 22-23 degrees. So this was one of the cool place I came to. It's a marketplace in Honslow, and the place itself is basically आपको यहाँ पे ना हर किस्म का खाना मिलेगा आपको, जिस तरह भी इन्होंने सारे जो रेस्टोरेंट्स हैं जैसे आप I don't know if you've been to Global Village in Dubai, but that's huge, that's more of entertainment. Here जो है ना सारी ये फूड मार्केट है, तो आपको हर कंट्री के, हर रीजन के, हर जगह के आपको यहाँ पे खाने मिलेंगे. Different sort of fresh food that they do prepare. You ask for biryani, it's there, and it's really really nice and competitive price. It's not that कि भाई बहुत ज़्यादा expensive है, बड़े रिजनेबल प्राइस पे आपको जो है ना वो सारा खाना जो भी आपको चाहिए. नूडल्स है यहाँ पे, कोरियन, चाइनीज़, Turkish food. One of my favorite. You see the one in the front is this Turkish. So I came here before also, and I tried their this lamb kebab and shawarma platter. That was really good. एटमॉस्फेयर देखें आप, उन्होंने छोटी सी मतलब एक जगह को कवर करके दे पुट अप अ डिफरेंट कियोस्क रेस्टोरेंट्स, वहाँ पे उन्होंने सिटिंग बना दी है, एंड देन यू जस्ट कम ओवर एंजॉय योर लंच और डिनर और व्हाटएवर यू वुड लाइक. द प्लेस इज़ ओपन थ्रू आउट द डे. यहाँ पे आपको स्मूथीज़ मिलेंगी, यहाँ पे आपको लोकल चाट कॉर्नर्स हैं. अगर इफ़ यू वांट ट्राई समथिंग देसी, गोलगप्पे मिलेंगे आपको, कुछ भी आपको, मिठाइयाँ हैं. एंड दैट वाज रियली कूल प्लेस. So shortly after the walk, I just wanted to try the smoothie. Berry smoothie looked really tempting, so I just went in and asked for this mixed berry smoothie. I thought they were gonna make it fresh, लेकिन berries जो थी obviously उनकी वो frozen थी, तो लेकिन फिर भी it turned out to be really nice. I had this berry smoothies, and then I continued to enjoy it outside. बाकी जो है ना उसकी इसके बाद मैंने तुर्किश फूड वहाँ पे ट्राई की. We went to the mall, and that I will be uploading in a second part to make a video not to be that longer. So stay with the video. If you're willing to watch, you can go on the next part of this video to watch it. Till we meet in the next part, thank you for watching. Take care. Allah Hafiz.